Welcome to DC Motors videos. This is part 11. We are going to see the change of direction of rotation. आपके पास एक डीसी मोटर है, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज कर सकता है वो बताना है आज। वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत आसान है, देखेंगे क्या है। वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन DOR चेंज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना है। कौन सा करंट? इधर इन आर्मेचर और इन फील्ड, ये दोनों में एक आर्मेचर का करंट और फील्ड का करंट, वो दोनों में कोई एक चेंज करना है। सोचो हमारे आर्मेचर में एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल ए है, ये बहुत इंटरचेंज करना है। तो क्या होगा, करंट पहले बार ऐसा हो गया होगा, अभी उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो करंट चेंज करना है आर्मेचर और फील्ड दोनों में एक। वी डू नॉट चेंज द करंट्स बोथ टुगेदर। इफ यू आर चेंजिंग बोथ things together, the direction of rotation will not change, it will be the same direction of rotation. For a series motor, let us see, this is the three condition. Normal condition ऐसा है, we are having the 2-point starter and this is the direction of rotation and this is the armature and series field. It is the rotation of or the flow of current direction. Flow of direction of current, it is like this. So it is going like this. So this is considered as normal rotation. If we want to change the direction of rotation, what we are going to do is we'll be just either change the series field winding or the armature direction. Here in the second picture you can see the armature direction. Here it is the same current direction in both the cases, and field, you can see field is in here condition like this, but in this condition it is changed. So you can see the change in series field connection available like this. It is connected, reconnected the series field like this. Previously it was directly going like this, now it is changed. Because of this, the current in series field is changed and the direction of rotation was like this previously and it is now becoming like this. So this is the original and this is the changed direction of rotation with respect to series field connection change. Now the same thing we will be applying to the second condition. We will be changing the terminals of armature only and keep the series field same. Let us see, series field in original direction, normal direction is like this. Here also it is the same direction of current, but armature in this direction, but here it is in this direction of current. This connection was previously like this, now it has been changed like this and to the series field. Okay, so effectively the armature current is changed by the changing of terminals. Previously it is directly plus, now the plus it is to the opposite terminal has been given. Previously it was plus, now it is minus. So because of this, original direction of rotation was like this, now it is converted into opposite direction of rotation. Mean to say, if हमारे लिए कोई डीसी मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है, उसका आर्मेचर और फील्ड दोनों में कोई एक का डायरेक्शन चेंज करना है, तो ये सीरीज मोटर का रहता है। अभी हम देखते हैं शंट मोटर में तीन कंडीशन है। ये पहला वाला ओरिजिनल कंडीशन में नॉर्मल रोटेशन में ये करंट ऐसा फ्लो होता है, ये करंट फील्ड में शंट फील्ड में ऐसा फ्लो होता है। दूसरा कंडीशन में देखेंगे, ये आर्मेचर करंट सेम कंडीशन में है, अभी भी the same direction of current it is in the armature, but original condition of field is like this, we have changed into like this. So the direction of current has been changed into a new direction, the other direction. Because of that, the original direction of rotation was like this. In this condition, the direction of rotation has become the opposite direction. So to change the direction of rotation, we can change the shunt field. What is the other method? This is the first condition, and in the second condition we will be changing the armature direction of current. In the original condition the field is current like this, and in this condition also field is same direction, but armature it is like this. Now you can see, you will be able to see the direction of current has been changed, the polarities has been changed. Because of the change in polarity, the current direction will change. Because of that, the direction of rotation originally was like this, and here it will be the opposite direction. So to change the direction of rotation, we can change the field conditions or the armature connections. आर्मेचर का कनेक्शन इंटरचेंज करिए और फील्ड का कनेक्शन इंटरचेंज करिए, दोनों एक साथ नहीं। सो अभी डीसी रोटेशन में कॉम्पाउंड मशीन है तो क्या हो, तो ये सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन है, कॉम्पाउंड हम जानता है। तो
आपको फील्ड करंट और आर्मेचर करंट ही चेंज कर सकता है, लेकिन आप फील्ड करंट चेंज करता है तो एक कॉम्पाउंड मशीन में आपके पास होगा सीरीज एंड शंट, ये दोनों का कनेक्शन चेंज करना एक साथ होना है, नहीं तो क्या होगा, वो क्यूमुलेटिव हो गया तो अभी डिफरेंशियल बनेगा, नहीं तो डिफरेंशियल हो गया तो अभी क्यूमुलेटिव बनेगा। तो ये रूल सेम ही है, फील्ड चेंज करो और आर्मेचर चेंज करो। कॉम्पाउंड मशीन में आर्मेचर करंट चेंज करना अच्छा होगा, फील्ड करंट चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फील्ड करंट जब चेंज करता है तो सीरीज और शंट दोनों करना होगा, नहीं तो वो उसका क्यूमुलेटिव कंडीशन डिफरेंशियल होगा और डिफरेंशियल कंडीशन क्यूमुलेटिव में आएगा, वो प्रॉब्लम रहेगा। सो दिस आर द changes of direction of rotation of DC motors by changing either armature current or changing the field current will change the direction of rotation of a DC motor. Thank you.